RiffScript presents All Fingers and Thumbs. This is our 21st episode, and in today's episode we are going to talk about one of the most important things that has to be considered in India. We are going to talk about diabetes, and since I am not good with facts, I'll read it out loud. So there are a few facts about diabetes in India. So this condition affects more than 77 million people, and by 2045 it is expected to rise to a level of 134 million. So we may think that diabetes is quite common, but the condition is quite deteriorating for youth, because in today's age a lot of people are in between 18 to 50, and since we have adopted a lifestyle which is not ours truly, and that has affected a lot. So we are going to talk about this and how diabetes has an impact on our neurology and stuff like that. So in this episode we have a special guest. He is Dr Mudrik Patel, and he is a diabetologist, and he specializes in this area particularly. And so we'll talk about various things, and let's welcome him and let's get to know more. Thank you. So Mr. Jainish, I would like to ask you that he's a very good 26-year-old dynamic young man. So you are shooting this 21st podcast, right? Yes. So आपने कभी ऐसा सोचा था कि 21st podcast इतने सक्सेसफुल एपिसोड के साथ आपको मुद्रिक पटेल के साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था. So that was my question from my side. You can. ये इतना difficult question कभी किसी ने नहीं पूछा, लेकिन I'll answer this कि मैंने कभी नहीं सोचा था. You have come a long way through. Yeah. And thanks to देवेन कि आज हम फिर से ऑफलाइन शूट कर पा रहे हैं. तो मैं आज आपको पहला क्वेश्चन, अभी मेरी बारी में पूछता हूँ आपको कि मुझे सबसे पहले ये जानना है कि I mean if we go back to history, what's the origin of diabetes and how it came along across the globe, right? क्योंकि ऐसा हुआ है कि मतलब हर एक डिसीज या हर एक डिसऑर्डर का कोई ओरिजिन होता है जहाँ से धीरे धीरे करके, जैसे कोरोना का है कि ओरिजिन इन चाइना, पर अभी ऐसा है कि पूरे अक्रॉस द ग्लोब वो फैल चुका है. तो वैसे डायबिटीज की क्या हिस्ट्री है और इसका ओरिजिन हमें क्या सिखाता है? Well, I'm sure and I will be happy if Chinese people are not looking at this podcast. As he has mentioned that corona has been originated in China. So diabetes is a multifactorial disease, mainly a lifestyle disorder and also hereditary in nature. We all know that in recent decades, the title has been taken from the captain of men of death from tuberculosis and the great mimic syphilis. These were the titles given to tuberculosis and syphilis. Now we consider more important diabetes in one's life, because it is like a termite. It will help the wood to look clean. अच्छा दिखेगा आपका लकड़ा, but अंदर से it has been taken off totally, right? So side by side with the explosion of the prevalence of the new diabetics in the world, there has been numerous small inventions in the basic science and in the therapeutics for the betterment and comfortable life of a diabetic person, as compared to a quarter of century ago. If I talk about when was first diabetes described, it was in the Egyptian papyrus. Okay. It was been discovered in 19th century AD. It described the diabetes as a polyuric state. That means जो इंसान जो बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर रहा हो. Okay. It was just been described as this condition. It was not even named diabetes or something like that. And we came to know this in 19th century. It was been dated at around 1552 AD with the new carbon technology. They used to like know that when was this written or something like that. अच्छा. Okay, so and that papyrus was 110 pages long, around 110 pages long, and it described certain other folk remedies and ailments also, along with this condition, polyuric state. So now coming back to our Indian old history, old ancient Indian history, it is being said and it is being told in Chakradatta that Lord Shiva dictated a formulation for prameha. Prameha means excess urine, same thing, which was in the Egyptian papyrus, for prameha to his son Lord Ganesha. Okay. Now this says that why did he even try to give this such treatment or advise this treatment to Lord Ganesha? Because of his attraction towards the sweets and sedentary lifestyle. We all know him. In my view, he can be a old, and as the book says, he's been the ancient and oldest diabetic patient known till now.
Okay, that's what our Chakradatta or the book says. Okay. Now, two most ancient and popular books or Indian ancient books, Charak Samhita and Shushrut Samhita. In Charak Samhita, they have described 20 various types of prameha, which if not controlled can transform into madhume. Madhume means sweet urine. Okay, so since then we know the nature of urine will be sweet in diabetic people. Okay. So in Shushrut Samhita, they describe two types of madhume. One, Stula, and second, Krisha. Krisha resembles to the type 1 diabetics of this age, and Stula means type 2 diabetes. That is, it occurs in obese adults in adult agehood, most probably. Now, surprisingly, even the treatment of Stula mentioned in Shushrut Samhita was also the same as we treat now. The main line of treatment is our lifestyle modification. As I mentioned earlier, it is a lifestyle disorder, right? So I think we know the treatment. The treatment was known to us back before then now. Now coming back to the how the word diabetes was coined. It was coined by Aratus of Cappadocia in first or second century, and he termed it as a siphon to pass through, draining out water out of the body in form of urine, melting of flesh and the limbs out of the urine. So he just thought that the person is getting dehydrated and wasted out. So he termed it as diabetes. The foremost physician of Roman, he also termed it means he also accepted the definition in the same age. He gave the same definition. Now, surprisingly, both of them considered this polyuric state as a disorder of kidney and urinary bladder or something like that. But no one till then was known that it was a pancreatic disorder. Pancreas is just a gland located below the heart, after the rib cage, below the rib cage. It is mainly responsible for causing diabetes. Okay. Now, so we have been in the second century. Coming back, now only the word diabetes was coined till now, but the whole name is diabetes mellitus. So how was the term mellitus coined? It was coined it was termed in 17th century, somewhere around 1665 something. I don't remember exactly. It was termed mellitus because of the sweetness of the urine. Now this was also defined by our ancient history. And but before that, many of them think that it is not because of the sweetness of the urine or something like that. So they tried to just dry the urine, and they will see some white crystals inside that. So they thought that there is a salt congregation in the kidneys which is causing this state. Till now they didn't know what is this thing. And even in the Aratus of Cappadocia, they used to get very rare cases. Not like they were getting ample of cases. In just the recent decades, it has been exploded just because of the lifestyle. So now the major breakthrough came in 1889. Oscar Minkowski. What he did was he depancreatomized. That means he removed the pancreas of a dog, and he saw that the dog is having the same polyuric state as a human. So by that he decided that I think polyuric state, that is diabetes mellitus, it is because of pancreas and not because of any other disorder. So this is how they came to a conclusion that it is a disorder of pancreas and not of anything else. Later researches were done that in pancreas functions in two ways, exocrine and endocrine. What does the exocrine part do? It releases some digestive enzymes which digest our food. And what does the endocrine part does? It releases a hormone called insulin. Okay. This insulin is secreted inside the blood. This digestive enzymes, the exocrine part, it is secreted inside the digestive tract. Our intestine, stomach, esophagus, everything like that. It is called the digestive tract. So they concluded that if we remove the exocrine part of the pancreas, the endocrine part, that is there were islands of cells present in the pancreas, which was named as islets of Langerhans. A scientist called Langerhans described it. A person didn't suffer from diabetes if they just removed the exocrine and they left the endocrine part.
Okay. So what they try to did later, the scientists, they used to extract the leftover part of the pancreas and they used to inject in the people who used to have a polyuric state. Oh, okay. So the glucose part of the body used to come back to normal, but not possibly normal, but it used to come down, but with lots of side effects. Correct. So one of the other major breakthrough, I don't know if you know or not, the invention of insulin. Do you have any idea regarding it? No. Okay, so right before 100 years, we are celebrating 100 years of insulin discovery. Oh, wow. So in 1921, insulin was first discovered by Banting and Best. I am wrong, Banting and Best, but the Nobel Prize was given to Banting, Best, Colip and MacLeod. Now it is just a short, it's just a short story I tell you. We all, scientists till 1921 all knew that there is some internal secretion in the pancreas which can help in bringing down the sugars. Little of this was known to orthopedic surgeon Frederick Grant Banting. He is the hero of the whole story. Frederick Grant Banting. He was an orthopedic professor. He was not even interested in this physiology, the normal function of the pancreas and all. But he was a part-time physiology lecturer at Western University, Toronto. He was being told to take a lecture of the class on pancreas. So he was just referring to the old articles where he read somewhere that that's internal secretion, internal extract of the pancreas can help to the patient in diabetes to bring down the sugars. This we are particularly talking about patients who are suffering from type 1 diabetes. I'll talk about this later. To the type 1 diabetes only, right? So he was just sleeping one day. He got out of the bed. He woke up suddenly and got out of the bed, scribbled something, and what he wrote was diabetes. Diabetus. He even wrote the spelling wrong. Diabetes. Ligate the duct, and he wrote the whole small theory. And then he went to the seniors and superiors of the Western University. They were very supportive, but unfortunately it lacked the facilities and other things to support his theory. So his seniors and superiors advised him to go to University of Toronto, where he'll have to meet James MacLeod. The meeting between MacLeod and Grant Banting didn't go well. So MacLeod was not really impressed by the rudimentary knowledge of Banting regarding pancreas. So what he did was he at least did a favor that he gave a disused lab to Frederick Banting to perform the theories and practicals regarding the same. Banting asked for a secretary or an assistant that I'll need 2 assistants for the same. So MacLeod even favored this, and he gave two of his assistants, Charles Best and Clark Noble. So both of them tossed a coin that the one who wins will work for the first half of the summer and the second in the second half of the summer. Now both of them were working in a cramped lab. They came to the result hopefully that whatever the leftover portion was there inside the pancreas, they injected it in a dog who had a polyuric state. And the dog recovered very nicely. So that's how they came to know that there is something known as insulin, which if we inject in a diabetic patient, the patient will survive better. When finally they came to a result, so another thing was whom should be given the Nobel Prize. So later, previously, the insulin was impure. Obviously, they accepted it from a dog. So James Collett, a good friend of MacLeod, helped in the purification of the insulin part, which can be given to human. So in August 1921, insulin discovery was done, and in January 1922, Leonard Thomson was the first human to get the insulin. Now, अभी history में ऐसा first time हुआ है कि ये discovery हुई और 2 साल में Nobel Prize मिल गया. So it was a life-saving drug, insulin, which saved type 1 diabetics who can live only on insulin. No oral tablets can work on them. आपने सुना होगा छोटे बच्चों में diabetes होता है, वो वाला diabetes है ये. Okay, so but the Nobel Prize was given to Banting and MacLeod. MacLeod didn't do anything as such, just other than giving the laboratory. So Banting decided that I'll share the Nobel Prize with Charles Best, who worked in the laboratory with him, and MacLeod shared it with Colip, who purified it. So it has been said that who won the Nobel Prize for discovery of the insulin? हम लोग ये बोलते हैं Banting and Best, but it is Banting and MacLeod. So this is a small story behind insulin discovery and the history of
डायबिटीज। क्वाइट फैसिनेटिंग। आपने मतलब हमें इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर यूरोपियन हिस्ट्री तक लेकर गए। तो आपने उसमें दो चीजें मेंशन की which fascinates me the most. You mentioned that there are two types of diabetes, type 1 and type 2. So इतना जब रिसर्च हुआ तब हमने कब डिस्कवर किया कि टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के होते हैं और उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस तरह से होते हैं ताकि हमें पता चले? टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप के डायबिटीज है, ये तो बहुत पहले से मालूम था कि देयर आर टू टाइप ऑफ डायबिटीज, वन which gives a death sentence and the second which allows the person to live but lifestyle modification is the main treatment in them. As I mentioned, Shushu Samhita में भी ये था, type 1 and type 2 has been coined now only as of now in the modern age. पहले in 20th century also IDDM and NIDDM, that means insulin dependent diabetes mellitus and not non-insulin dependent diabetes mellitus. Okay. Now आपको questions आ रहे होंगे, what is this type 1 type 2 non-insulin insulin dependent, right? So I'll just tell you a small cycle. Whatever food we eat, it enters, obviously it has entered the mouth, esophagus, stomach, it will enter your digestive tract, intestine, फिर वो blood में जाएगा, तो blood में food glucose में convert हो जाएगा. Glucose को हर एक body के cell में जाना है और energy में convert करना है. This says the fact, खाने से energy मिलती है. This is the cycle, right? So glucose को अगर cell में enter होना है, तो उसको एक natural hormone की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ पेनक्रियास से सिक्रीट होता है. We call it insulin. इंसुलिन सिक्रीट होता है, ग्लूकोज सेल में अंदर जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है. So what happens sometimes, अगर पेनक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहा, we call it type 1 diabetes. Okay. 100% destruction of the beta cells, of the cells of the pancreas which are producing insulin. Sometimes beta cells इंसुलिन तो बना रहा है, but वो बाहर नहीं निकल रहा. It is not able to secrete it out. It is called diabetes. चलो बना भी रहा है, निकल भी रहा है पेनक्रियास में से, ब्लड में भी एंटर हो रहा है, but it is not able to work properly. Or it is being secreted inefficiently, not in a proper quantity, and we call it diabetes. So the latter which I said is type 2 diabetes. Okay. It is a hereditary nature, and it occurs mostly in means if you have a first degree relative history, and if you are too obese, insulin जितना भी body में है, but it is not able to work. So as I said, in type 1 diabetes, insulin is the only treatment. उनको हर बार इंसुलिन लेना ही पड़ेगा to lower down their blood sugar and to control it and to keep it in the range. Now you will get another questions like ये कौन सी एज में होता है, it is hereditary, if it is hereditary in nature, उनके alarming signs क्या होते हैं, उनमें complications क्या रहेंगे. So it is mostly seen in young age, as in childhood, between the age of 1 up to 18 years old. I have also seen between the age of 1 and 23 years old. It can happen. Now what will you see is the person, it has 3 P's: polyuria, polydipsia and polyphagia. What does this mean? A person will pass lot of urine, a person will drink lot of water, and person will eat a lot. बहुत भूख लगेगी, बहुत प्यास लगेगी, बहुत जाना पड़ेगा वॉशरूम करने के लिए. Okay. So and the person will lose weight. So we see certain patients in getting admitted in the hospital कि बच्चा अच्छा था, खेल रहा था, मोटा भी था, but एकदम से वजन कम होने लगा. The parents get happy, चलो वजन कम हो रहा है, the person is active, and when they rush to the hospital, they see the sugars, it will be about 300, 400, etc. So the person can end in coma also. तो बच्चा कोमा में भी जा सकता है उस टाइम पर. Okay. But only it is rare chances that in this state a child will die. Because of we have the modern technologies, modern equipments to test if the patient is having high blood sugars and etc. any complications or not. So I've seen certain child समझदार भी नहीं होते हैं, समझ के भी नहीं होते हैं और उनको इंसुलिन दिया जाता है. And they have been told that you have to take this. कुछ भी नहीं बोलो, but ये तो बोलना ही मत कभी. कुछ भी बोल जाओ चलेगा, ये मत बोलना. और वो भी तब जब वो उनको चॉकलेट समझ में भी नहीं होता है. हाँ, और उनको ये सब नहीं अवॉइड करना और इंसुलिन लेना. Just imagine you are a child, you want to go and play out, and suddenly your sugar drops. See, I and you, we both don't know what is a low sugar episode. It is very dangerous. It is near death episode. It is a near death event. If your sugars fall below 60, 50, 40, it is fatal. You can even die. Yeah, so they experience it every now and then in their daily life. Those children. And I have seen certain patients at the age of 65, 60s having type 1 diabetes. They say that I got diabetes when I was 12 years old, 11 years old. So you just cannot even count
since when they are diabetic and कितना hypoglycemia, कितने low sugar, high sugar episodes रहे होंगे, and it impacts the mental thinking and everything. It impacts everything, and they are prone to each and every complication which a normal diabetic person can. Kidneys, livers, eyes, brain, heart. They are prone to get complicated more early because they get infected early. They get diabetic early, and they are even more prone to get various infections. जो किसी को यूरिन इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, लंग इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, because diabetes is also a state of immunosuppression. Immunity कम हो जाती है, diabetes होता है तो. So that's the reason. And it's very difficult to make the parents understand first. 1 साल, 2 साल, 3 साल तो उनके पेरेंट्स को समझाने में जाता है. See, your child is not defective. आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं हुई है, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया कि इंसुलिन जो बनता है वो बन नहीं रहा है. Likewise, if you have heard of thyroid, इनको थायराइड की तकलीफ है. वो मतलब क्या होता है? थायराइड का जो ग्लैंड है, if it is hypothyroidism, थायराइड से नहीं निकलता हार्मोन यहाँ से, तो we give the tablet form. सेम इंसुलिन नहीं निकलता तो इंसुलिन देना पड़ता है. अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है तो प्रॉब्लम होती है. कंट्रोल में रहता है तो the child can live for 100 years. So it should be normalized. Yeah. कि कॉमन है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. So we basically see peaks, mountain peaks in the sugar levels in everyday life. अभी 6 बजे शाम को 97 था, तो 10 बजे रात को 497 हो जाएगा. We see these peaks every day in type 1 diabetes life, and it is very difficult to manage it. It can be managed mostly by the lifestyle changes rather than the insulin doses. So lifestyle is a main pillar of both the type of diabetes, I feel, type 1 and type 2 as well. Interesting. तो टाइप 1 और टाइप 2 में अगर मतलब नॉर्मल फंक्शन करना, जैसे अभी आपने बताया कि टाइप 1 में अगर छोटे बच्चे को मतलब बचपन से अगर ये सब इश्यूज डील करने होते हैं तो डेली रूटीन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और नॉर्मल फंक्शन करना इज डिफिकल्ट अगर वो कंट्रोल नहीं किया गया है. तो वैसे मतलब अगर टाइप 1 या टाइप 2 कोई भी हो तो डायबिटीज का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? It mainly depends on how the person takes it. There is no direct relation between diabetes affecting the mental health. See, you might have heard about type A and type B personality, right? So अगर मैं ऐसे नेचर का हूँ कि कुछ भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? उसको डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But if you make them believe कि देखो इसको ध्यान में रखो, इसको ऐसा करो, ये करो, वो करो. If you scare them, if you make them afraid about their illness, it tends that person can have stress, depression, and he or she might end up thinking कि ये मुझे क्या हो गया? Like I'm not a normal person. अगर आप बस बोला जाए कि आप आज से सारी मिठाई बंद, सारा तला हुआ बंद, अरे यही तो जीवन है सबके लिए. ये तो खाते लोग. That's how our lifestyle has become right now, right? So डायरेक्ट वो अफेक्ट करता है कि मैं ये नहीं खा पाऊंगा, मैं वो नहीं खा पाऊंगा. And then they end up having discussions with their family members कि ये तो खाता हूँ तो शुगर तो इतना रहता है, मैं तो कर ही पाऊंगा. So this gives birth to a social disputes. हमें तो इनका ध्यान रखना है, but इनको उनका ध्यान नहीं रखना है. So lastly the person ends up losing all the arguments with the family members, with their friends, even with the doctors. आप ही बताओ क्या करना है लास्ट में, शुगर तो कंट्रोल में है मेरा, ये तो है, वो तो है, ये नहीं करता, वो नहीं करता. So it all depends on how the person takes it. It is not like diabetes है तो फिर ये illness होने के chances ज़्यादा है. Yes, I have seen OCD more often in diabetic patients because I keep doctor का बहुत ज़्यादा important role आता है उसमें. It depends on how the doctor tells the patient to check the sugars. रोज चेक करो, इतना होना चाहिए, इतना हुआ तो ज़्यादा, इतना हुआ तो कम है, ऐसा नहीं होता है कभी. There is a range. Always there is a range. In biology, in our medical science, कोई perfect term नहीं है, perfect value नहीं है. यही होता है तो normal है. Always there is a range. If your fasting sugar is less than 130 and you are diabetic, it's normal. If your after food sugar is less than 180 and you are diabetic, it is normal. If you are non-diabetic, your fasting sugar must be less than 100, and if you are and less than 140 after the food. If it is more, don't panic. Sometimes there is a term called stress hyperglycemia. उसमें sugar rise हो जाता है, but it is a transient phase. वो sugar down भी हो जाता है. So you should consult a doctor, obviously me, like me, for such things. So yeah, OCD. I was talking about OCD. So
It depends on a doctor most probably that how you educate your patient regarding diabetes. कितना educate करते हो, ज़्यादा भी educate मत कर दो कि वो खुद अपने आप से literature पढ़ने लगे, articles पढ़ने लगे और हमको doubt हो जाए कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, अभी मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया. See what is OCD? Obsessive compulsive disorder, right? Excessive thought, unimportant thoughts, which becomes a compulsion. मैं बोलूँगा patient को कि 8 बजे सुबह check करना ही करना है. I should not say that. उठो, brush करो, check कर लो कितना है. Why should I keep a value? I should not. 130 से कम होना ही चाहिए. नहीं, कोई बार ऊपर fluctuate हो जाएगा. Don't worry. It all depends on the food you eat also. Now, if the patient is having such personalities कि particular, I'm very particular about. You might have come across such personalities. I'm very particular about this. मैं बहुत particular. मैं कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता है. इन लोग का ज़्यादा तरीके से ऐसा सब होता है. एंड वो हमें भी बहुत लेटरल थिंकिंग में डाल देते हैं कि अभी इनको कैसे मैनेज करना है. सर जी मैंने ये खाया तो इतना आया. सर मैंने ये नहीं खाया तो इतना आया. सर बट मैंने यही चीज उस दिन खाई थी तो इतना आ गया था. नाउ सी दिस गिविंग राइज टू न्यू डिसऑर्डर्स. मेरे लिए भी और उनके लिए भी. ऑनेस्टली आई डोंट हैव आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज़ हम डॉक्टर्स के लिए हर एक पेशेंट डिफरेंट होता है. हर एक पेशेंट के लिए डिफरेंट ड्रग होती है. कैसे काम करेगी वो भी डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल मैं देवेंद्र को कुछ बोलता हूँ तो उनको अलग से फील होगा. मैं डांटता हूँ, चल मैं उनको डांटता हूँ तो इतना लेंगे कि डांट दिया कोई बात नहीं, मुझे क्या पड़ी है ही कौन वो, कोई बात नहीं. बट मैं वही चीज आपको डांटता हूँ तो आपको ज्यादा लग जाएगा शायद. तो हाउ कैन आई कंपेयर द वैल्यूज देयर वेयर आई कांट कंपेयर द इमोशंस हियर. सो ईच एंड एवरी पर्सन फॉर अस इज डिफरेंट. करेक्ट. तो मतलब मैंने ये अभी देखा है कि गूगल के टाइम में लोग पहले तो सबसे पहले गूगल कर लेते. मैं माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद गूगल इज जब मुझे 2016 में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मुझे लगा क्योंकि किडनी में पेन हो रहा था, मुझे डर लग रहा था कि स्टोन है, मुझे ऐसा लग रहा था. लेकिन मेरा एक्सेसिव थॉट ये था कि मुझे शायद अपेंडिक्स ना निकले. तो मैंने which side was it, left side or right side? लेफ्ट साइड. अपेंडिक्स. मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ नहीं, तो मैंने गूगल पर सर्च किया और जितने मेरे सिम्टम्स थे वो सारे अपेंडिक्स से मैच कर रहे थे. तो मैं पैनिक इस वजह से नहीं कर रहा था कि मुझे पेन हो रहा है, मैं इस वजह से कर रहा था कि शायद मुझे अपेंडिक्स ना निकले. सर्जरी करनी पड़ेगी. तो जनरली होता है कि गूगल पर लोग सर्च करते हैं, ऊपर से हर एक जगह पर वो कैलोरी गिनने लगते हैं. कभी मैंने ये फूड आइटम कंज्यूम की है तो इतनी कैलोरी मैंने कंज्यूम की है तो मुझे ये दिया. तो उससे वो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं भी हुआ होता तो भी ज्यादा अफेक्ट होने लगते हैं. We see this lot of in type 1 patients. कैलोरीज के हिसाब से उनको इंसुलिन डोज लेना पड़ता है. They are allowed to eat in parties and along वो सब खा सकते हो लोग, बट एक्स्ट्रा पार्टीज में एक्स्ट्रा फूड मींस एक्स्ट्रा कैलोरी, सो उनको उतना डोज ज्यादा लेना पड़ता है. So they tend to get more OCD कि check and often they have to check also and it's betterment for their health only. And एक बात आपने बहुत अच्छी बोली, Google is the worst worker I've ever seen. Okay, आप फीवर सर्च करोगे आपको कैंसर मिल जाएगा. आप एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द सर्च करोगे शायद आपको प्रेगनेंसी भी मिल जाएगा. So कुछ भी मिल सकता है उधर. So please don't trust Google completely, I would say. करेक्ट. नॉन मेडिकल फील्ड में सर्च कर सकते हैं, मेडिकल का नहीं कर सकते. I think Google should make another software Google for non-medicals and they should just give the most common things which occurs in the medical thing. अगर कोई सर्च करे फीवर है, सोर थ्रोट और ऐसा कुछ है तो क्या हो सकता है तो डायरेक्ट यार कोरोना मत लिख दो, कुछ ना कुछ एलर्जिक लिख दो, वो लिख दो. करेक्ट. नहीं पर ऐसा मतलब उसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे होता है कि फ्लैग आ जाए कि ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, तो उसको ज्यादा आप डायग्नोस करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाओ या फिर कोई एक्सपर्ट के पास जाओ, ऐसा हो सकता है. तो अभी आपने जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात की तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसे 2-3 डिजीज ऐसे हैं जो या डिसऑर्डर कह लो, मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं पता, लेकिन जो अल्जाइमर्स है, स्किज़ोफ्रेनिया है, जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते. इवन दो वी हैव एडवांस्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर हम अभी तक उनका ओरिजिन या फिर उनके बारे में ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाए. तो अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिनमें ये सिम्टम्स हो अल्जाइमर्स के, स्किज़ोफ्रेनिया के, और एडिशनली उनके अंदर डायबिटीज, थायराइड ऐसा कोई भी इश्यू हो, तो वो कैसे डील कर सकते हैं या फिर वो कैसे हैंडल करते हैं ऐसी चीजों को? Well, I would like to say this is the सबसे डिफिकल्ट मेरे शायद टॉप मोस्ट केसेस में रहेगा जो मैंने कभी हैंडल किए होंगे. I treated one patient
Alzheimer's, who was suffering from Alzheimer's and was also having diabetes, blood pressure, heart disease, everything she was having. So the main task, and it was challenging, was to make her understand and to make her feel you are diabetic hai, she has to take the tablets regularly. Now what happens? There is a click. कभी वो याद आएगा, कभी वो याद नहीं आएगा. Now the relatives, the nursing the nursing staff, etc. These people have to take care of her probably, and they have to take care very patiently. उनको समझाना पड़ता है. They are not Alzheimer patients. There are phases. आप कितना भूलते हैं और कब कब भूलते हैं. In initial years, the patient will come, diabetes कब से याद नहीं है सर, but है. Secondly, diabetes की गोलियां खाई है मैंने. देखो शुगर तो मेरे अच्छे हैं, शुगर अच्छे नहीं रहेंगे. थर्ड, डायबिटीज मुझे है ही नहीं, कब से आ गया. एंड लास्टली, मुझे किसी ने बताया नहीं मुझे डायबिटीज है, मैं तो गोलियां भी कुछ खाती नहीं हूँ, बट शी मस्ट हैव जस्ट एट द टैबलेट जस्ट 2 minutes बिफोर. सो देयर आर स्टेजेस एंड यू हैव टू डील विद देम अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस. एंड मैंने जो एक लेडी की बात की व्हिच आई केम अक्रॉस डायबिटिक, शी आल्सो यूज्ड टू फॉरगेट टू वेयर हर क्लोथ्स, टेक बाथ, नो हर रिलेटिव्स. So how would you even expect this patient to take tablets regularly? Correct. You should not force her or you should not make her sad even to tablet नहीं लिया आपने क्या कर रहे हो. Just let her live the rest of her life with a good quality. Diabetes से तुरंत थोड़ी मरने वाला है, but वो stress से शायद it can affect her. So what I believe is just keep her sugars within just not so strictly, but इतना रख दो कि patient doesn't end up being in the hospital. And talking about other psychological disorders, it depends on how severe they are. But मिलता है देखने के लिए because they are मिलता है देखने के लिए very commonly that psychological disorder and diabetes, because the drugs which are used in psychiatric diseases, drug का side effects होता है carbohydrate imbalance, मतलब वो उससे भी sugar बढ़ता है थोड़ा. So we have to manage them on a basic level commonly. Correct. तो बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, किसी को वो सफर कर रहे हो और ऊपर से अगर फैमिली मेंबर्स या कोई एक्सटेंडेड मतलब रिलेटिव्स जो है वो अगर स्ट्रेस में आके ज्यादा वो कर ज्यादा स्ट्रिक हो जाए तो इट इज अ टीम वर्क ऑफ द फैमिली. द पेशेंट तो बीच में आता ही नहीं है. पेशेंट को तो कुछ भी मालूम नहीं है. डिपेंड्स ऑन हाउ द फैमिली वांट्स द पेशेंट टू सर्वाइव. करेक्ट. हिज लास्ट इयर्स. इट इज अ टीम वर्क ऑफ द फैमिली, of the doctor, the diabetologist and the psychiatrist, how to manage the patient. And it's really very difficult and a challenging task. Because patient को भी पता चलेगा कि मुझे ये है ना, हमको शायद फील हो जाए कि यार what is this patient feeling, ऐसा हो रहा है के साथ, but patient अपने मस्ती में रहेगा. Correct. He or she will be in own imaginary world. If it is schizophrenia or if it is Alzheimer's. Yeah, it affects the patients a lot if the patient is having from bipolar disorder, depression, mania. तो ज़्यादा तकलीफ हो जाती है. But in those cases, he or she won't forget to take the medicine. They won't be taking the medicine by their wish. कि नहीं लेना है अभी, because they might be also having suicidal thoughts. So I think in that case, psychiatrist का main role होता है to make them realize of a new life or something. पर उसके पहले साइकियाट्रिस्ट से पहले अगर फैमिली को भी पता नहीं चले तो वो भी इशू है ना. So I think उनकी अवेयरनेस भी मैटर करती है कि वो चीजों को कैसे एक्सेप्ट. जैसे आपने बताया कि कोई अगर छोटे बच्चे को डायबिटीज हो जाता है तो उनके पेरेंट्स को पहले तो एक्सेप्ट करवाना कि ये हुआ है और ये नॉर्मल है, वो डिफिकल्ट है. तो ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो बहुत ही रेयर भी है और उनका कोई क्योर नहीं है और या उनका ओरिजिन नहीं है, काफी टाइम पता भी नहीं चलता है. We end up making them feel कि ये तो पागल है यार, कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है. ऐसा नहीं होता है. हर एक इंसान की सोच अलग होती है. See, if I'm speaking something to you, I expect back something कि ये पूछेगा, ये ऐसे रिएक्ट करेगा. वो नहीं करना होता जनरली, बट अगर वो जो ज्यादा करते हैं उनको तकलीफ होती है. मैंने इसके लिए ऐसा किया, उसने इतना भी नहीं किया. तो हर एक पर्सन का एटीट्यूड डिफरेंट होता है. So many times we miss out that he or she is having depression. Because a depressed person will not show that I am depressed. वो basically हंसने में निकालेगा, हाँ सर सब ठीक है चल रहा है, उसमें क्या है. Correct. There are many depressive scales. If you just make them sit randomly बिठाओ और बोलो कि कब लास्ट हंसे थे, क्या है वो स्केल के, तो you will see that out of 100, 17 or 20 people will end up having depression. Okay. See, it is this common and we don't know. Correct.
So I think I just made a topic for 20-second podcast today. Right? बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे. We'll call you again with another topic. तो ये भी क्वेश्चन एक है कि न्यूरॉन्स पर क्या इम्पैक्ट होता होगा? हाँ, न्यूरॉन्स पर भी काफी कॉमन इफेक्ट है डायबिटीज का. सी एक्चुअली डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दो हैं, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर. नाउ व्हाट आर दिस टू? अगर माइक्रो वेसल्स, अगर हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हर एक जगह पे होती है, वो छोटी भी होती है बड़ी भी होती है. अगर छोटी वेसल्स अफेक्ट होगी तो उसको माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, बड़ी वेसल कॉम्प्लिकेट होगी तो उसको मैक्रोवास्कुलर बोल देता है. आपने सुना भी कि पैरों में तो खून ही जाना बंद हो गया, पैर काला पड़ गया, पैर काटना पड़ा. दैट इज अ मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन. व्हाट इज अ माइक्रोवास्कुलर? जहां पे छोटी-छोटी आर्टरीज है, छोटे-छोटे ब्लड वेसल्स है. कहां पे? वो किडनी में, आईज में एंड थ्रू आउट द बॉडी इन नर्व्स. नर्व मींस जो हमको सेंस, हम कुछ छूते हैं तो आपको पता चलता है. नर्व्स कैच दैट इंपल्स, पासेस ऑन टू द ब्रेन. अब ब्रेन वापस मैसेज भेजता है कि अरे हाथ वापस ले लो, वो सुई है. इज दिस फास्ट? ओके. So when these nerves get affected, nerve is made up of neurons. Okay, so when the nerves get affected, patient commonly complain करता है, साहब पैर में जलन होती है, सर पैरों में खुजली भी होती है काफी बार, सर पेन भी होता है, कोई थोड़ी मारा है ऐसा लग रहा है, कोई पैर जला रहा है ऐसा लग रहा है. Now if the blood vessels, micro blood vessels get affected, अगर सोच लीजिए दिमाग में अफेक्ट हो रहा है तो पैरालिसिस हो जाएगा. यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है तो पूरे लेफ्ट साइड का बॉडी पैरालिसिस हो जाएगा. अगर पूरा एरिया हो रहा है ब्लॉक तो फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाएगा. So paralysis, we call it medical term stroke. It is a very serious adverse event in a diabetic person. अगर जल्दी पता चल जाए, कैसे पता चलेगा? Person will complain, लेफ्ट साइड हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है आज. And generally we take it as अरे यार क्या सोने में लग गया होगा, कहीं पे ऐसा कुछ हो गया होगा. अगर वो जैसे ही बोले कि लेफ्ट साइड का पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है and I'm not able to hold the things, take it to the doctor. शायद हो सकता है कि स्ट्रोक आ जाए. So एक स्ट्रोक पेशेंट को स्ट्रोक में, फुल ब्लोन स्ट्रोक में जाने से बचाना is really a blessing. And if you are a doctor और आपने ऐसा किया है, you feel really blessed कि भाई पेशेंट को actually मरने से बचाया है and you feel really good. Correct. So this is how neurons and the blood vessels get affected in diabetic person. Eyes में भी जो blood vessel होती है वो किडनी में होती है. So if I see a patient जिससे किडनी खराब हो, अगर खराब होने के स्टेज पे भी हो, early damage, then I tell the patient आँख चेक कराओ. इसमें सर आँख के क्यों करा है? नंबर तो सही है पर नंबर चेक नहीं करना है. पीछे का पर्दा चेक करना है. A curtain, there is an eyes and ear, we both have a curtain. बहुत पतला होता है जो डायबिटीज में अफेक्ट हो जाता है. कैसे? जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें से लीक हो जाते हैं ब्लड बाहर, तो it affects the vision. So I tell the kidney patients, get your eyesight first checked. नंबर नहीं, पीछे का रेटिना चेक करो जो मेन विजन में रोल प्ले करता है. So if you two people come across any patient, diabetic patient जिसका किडनी थोड़ा भी खराब है, तो उनको तुरंत बोलो आँख चेक कराओ. Same blood vessels over there also. तो जैसे आपने शुरुआत की थी कि आप you took us through history, world history, तो मुझे ये भी जानना है कि जैसे अभी पहले ऐसा होता था कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ओबेसिटी का इश्यू ज्यादा रहता था और इंडिया में यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम से, जब से ग्लोबलाइजेशन 1990s में हुआ, तब से हमने बहुत सारी चीजें बाहर से लाए, हम सीखे, तो उसकी वजह से लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए, तो डायबिटीज के पेशेंट्स भी बढ़ गए. जैसे मैं बिगिनिंग में फैक्ट बताया कि अभी 2045 तक तो 134 मिलियन तक जाने के चांसेस है. तो इतना बड़ा मेजर चेंज कैसे हुआ इंडिया में, उसका ओरिजिन और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? See, what I really think is the way we Indians accepted the Western culture is really very funny. Me being one of them. Okay. Yeah. So it is said that in US, out of 100 obese, 11% have diabetes. 11% of the obese have diabetes, and I think that is almost the same ratio, same percentage with Indians also. In Indians, we don't see gross obesity. मतलब पूरा आदमी आपको मोटा नहीं दिखेगा, but there is a term called abdominal obesity, central obesity. Means fatty liver होता है, पेट के अंदर फैट होता है, but बाहर दिखता नहीं है. That is one of the main reason for diabetes also. Now I won't say कि वो हमने खुद से पैदा किया है. It is a what we see. It is a feature of South Asians basically. Us, Nepalis, Pakistanis, Bangladeshis, इन सब में दिखता है सेंट्रल ओबेसिटी. सो जिस परसेंटेज और या रिस्क स्कोर से अगर कोई यूएस को हार्ट अटैक आता है
बट हमारे लिए वो इंटेंसिटी कम होगी। हाँ, कि मान लीजिए कि हमको इतना स्मोकिंग करने से और इतना मोटापा होने से हार्ट अटैक आ गया, बट उसकी थ्रेशोल्ड यूएस में बहुत ज्यादा है, so we are at more risk of getting those cardiovascular diseases and heart attacks and infarctions because we have more of the central obesity. Now, how we have accepted the scenario of diabetes mellitus? Truly speaking, most of them have not. Diabetes हुआ है सर आपको, क्या बात कर रहे हैं, मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, ठीक है? We don't have that urge to have the full body checkups. We don't even the diabetics don't test their blood sugar. While we see in Western culture, अगर ये सब करो ना Western culture का तो फिर regular checkups. I won't say कि करते रहो, but at least if you have diabetes, go for a 4-monthly checkup. There are quarterly tests, yearly tests which you should do if you have diabetes. ऐसा नहीं है कि टेस्ट करके तो निकलेगा कुछ तो गोली खानी पड़ेगी. अगर निकलता है तो उससे कुछ करो. It's not that you have to live long. It's like जितना भी जियो, it should be a quality of life. Quality of life should be better rather than the quantity. हिंदी डायलॉग है, but मैंने इंग्लिश में बोल दिया. It should not be like you should live long, but जितना भी जियो, it should be a quality. So yeah, we are talking about Indian scenario. So I've seen certain patients having the diabetes, newly diagnosed diabetes between the age of 25 to 35. They come to me, sir हमको diabetes है. So मैं भी शॉक होकर सरप्राइज होकर पूछता हूँ, कैसे पता चला? आप मोटे भी तो नहीं हो इतने, कैसा गया डायबिटीज आपको? Now to even your surprise, I see most of the young diabetics, they are working in IT. So they'll be having that midnight jobs. पूरा बॉडी का सर्काडियन रिदम गया भाड़ में, सोने के टाइम पे जाग रहे होते हैं, जागने के टाइम पे सो रहे होते हैं वो। डरा रहे हैं। So and हम भी कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं अपना सर्काडियन रिदम. We are shooting this at 2 a.m. in the night. So yeah, having sleepless nights because अगर आप सो नहीं रहे, भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है. पहले क्या होता था कि रात को गांव में जो बोलते हैं कि रात को 8:30 बजे सो जाने का और सुबह उठ जाने का. That coordinated with जब सनसेट होता है तब सो जाओ, जब सनराइज होता है तब उठ जाओ और बीच में काम करो. वर्किंग ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग तो सेम ही रहेंगे ना, बट अगर हमारी एबिलिटी माइंड की काम करने की, हमारी बॉडी की एबिलिटी काम करने की, वो डे लाइट में ज्यादा रहती है. सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, करेक्ट, राइट? सो बट हम ऑपोजिट जा रहे हैं because of the western civilization and everything and all. But there is no cure in this. मतलब मैं ये सब तो चेंज नहीं कर सकता. पेशेंट को मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ कि चेंज आ जाओ, कुछ भी करो. जॉब क्यों कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए ना. पैसे क्यों कमा रहे हो? जीने के लिए ना. वो ही नहीं हो पाएगा ठीक से, और वो नहीं हो रहा है ठीक से. देख लो आपके शुगर लेवल्स. अगर आप फिट एंड फाइन होते हैं, then why are this deranged? वो क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? There has to be some sort of reason, right? It is quite ऐसा होता है कि they change their job timings और sugar level normal रहता है, because there is some normal functioning in our body कि रात को 3 बजे natural hormones produce होते हैं जो sugar बढ़ाता है, and if you are awake तो वो ज़्यादा बढ़ेगा. So see, so it's just a lot of science, but basically you just don't have to deal with your body very erratically. जैसा बोला जा रहा है वैसा करो. Early to bed, early to rise, keep a person healthy and wise. Something sort of I've heard. So ये follow करना चाहिए. Us being not following the same. तो इस हिसाब से ये last episode है. RiffScript बंद कर देते हैं. देवन भी हमें बोलते हैं कि को सो जाए. हाँ, so sleepless nights, moodless nights, और sleepless nights रहेगी तो moodless nights भी रह सकती है. Because अगर वो इंसान रात को जाग रहा है जब सब सो रहे हैं, तो he might be thinking something. Same as मैं patients को बोलता हूँ कि walking is very important for your health. How? Why? कैसे? Walking करने के क्या benefits है? आपके हिसाब से क्या benefits है walking के? Walking मतलब 2 benefits मैंने जो महसूस किए. सब बताओ जो भी मालूम. हाँ, एक ये कि आपका पहले तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है, आपकी फिजियोलॉजी सही रहती है, और खास तो ये रहता है कि आपको मतलब सोच अच्छी रहती है आपकी, मतलब आपको अच्छे थॉट्स आते हैं जब भी लाइफ में. मेन थिंग यू सेड एक्चुअली. हाँ, लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी हो, अगर आप लंबे वॉक पर चले जाओ और सोचो तो क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शन अच्छे से करने लगता है, मुझे ऐसा लगता है. सो इफ यू सी मी आउटसाइड आफ्टर दिस पॉडकास्ट, मैं हमेशा वॉक करूंगा फोन पे बात करते हुए.
सेम ओके क्या बात है सो दैट वे मेरे स्टेप्स भी बढ़ते हैं मैं दिमाग भी मेरा ज्यादा चलता है सो वॉकिंग के बेनिफिट्स में मैं एक छोटे से उसमें मैं निपटा दूंगा शुगर नॉर्मल रहता है वी ऑल नो प्रेशर कंट्रोल में रहता है वी नो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है हार्ट के लिए हेल्दी है फिजिक के लिए हेल्दी है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज सेड अगर कोई इंसान चलता है वो सिर्फ चलता नहीं है माइंड भी साथ में चलता है he keeps on thinking something मैं चल रहा हूँ कल ये करूँगा आज वो करूँगा it makes you productive it makes you alert it makes you more enthusiastic for what things you are doing and the perfect time is in the morning so the people who do jobs in the nights and all they can't able to maintain they are not able to maintain this cycle so I know that lifestyle modification is the main pillar for the control of diabetes actually we have 4 pillars. First is the lifestyle modification, second is the drugs which the doctors give, third is the regular follow-up, and fourth, social means how is he dealing with the family and all. Correct. That impacts a lot. Interesting. तो आपने जो अभी स्लीप साइकिल का बताया तो जो हमें डरा है हम जैसे को यू बेसिकली हम जैसे को डरा है मतलब अगर जॉब कर रहे तो जॉब तो चेंज कर सकते हैं लेकिन कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा तो नहीं धंधा बंद कर देगा एंटरप्रेन्योर चेंज कर दो लेकिन मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है आई माइट बी रैशनल हियर बट मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि जब मैं रात को बैठकर काम करता हूँ तो आई थिंक क्वाइट क्लियरली और मैं अच्छे से ज्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूँ और क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम होता है और फोकस सिर्फ आपका और आपके काम पर रहता है तो आपको ज्यादा अच्छे थॉट्स मुझे जब भी अच्छे अच्छे आइडियाज आए ये पॉडकास्ट का आइडिया भी रात को आया था कि भाई मुझे पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करनी है फिर मुझे ये ऐसे ही कि भाई डिजिटल मार्केटिंग या ब्रांडिंग के लिए कंपनी स्टार्ट करनी वो सब रात को आते हैं मेरे आइडियाज दिन में मैं ऐसे पड़े रहता हूँ उन लोगों की तरह दिन में बाकी सारे काम करते लेकिन मेन जहाँ पर फोकस ज्यादा चाहिए तो वो रात को ज्यादा फील होता है तो उस चीज का क्या करें अगर स्लीप साइकिल मेंटेन भी करनी है और ये सब प्रोडक्टिव भी फील करना है तो क्या करें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा व्हिच इज वेरी ट्रू एंड यू माइट हैव इवन एक्सपीरियंस्ड इट कि बॉडी में दो चीज ऐसी है ना जिसको जैसे सिखाओ वैसा करेगी फर्स्ट इज माइंड एंड स्लीप ऑब्वियसली सेकंड इज द हंगर एंड स्टमक जितना खाना है उतना पेट को समझो इतना ही खाऊंगा तो इतने में पेट भर जाएगा माइंड को बोलो कि मुझे इतने से सोना है one can even feel lazy after sleeping 12 to 18 hours and one can even feel fresh after sleeping of 3 hours you have to train your mind maybe आपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि रात को ही आइडियाज आते हैं यार सुबह तो नहीं आएंगे नहीं आइडियाज आते हैं लेकिन इतने नहीं आते जितने रात को आते हैं maybe when you're implementing the night ideas more than the day ideas yes. this can be a thing which you should think about and if you have a diabetic history in your family or something like that you should I'm being a little manipulative here you should end up working late night try करके देखिए सुबह उठ जाओ 6 बजे start your work just don't see कि कोई उठ रहा है कोई जाग रहा है कोई दूध वाला है कोई पेपर वाला है just start your work I think अब दोपहर तक तो you'll feel like मैंने काम खत्म कर दिया और आपको दिन बहुत लंबा लगेगा हाँ वो तो होता है उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है करेक्ट yes that is true even in my case कि रात को ही आइडिया आते हैं सब and that's because हम कुछ नहीं कर रहे होते कोई हमको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है बट वो भी हमको माइंड को ट्रेन किया होता है I can see you can also work one can also work while surrounded by a lot of drums lot of noise correct it depends on you हाँ mind is a very powerful thing correct very very powerful thing अगर कोई जितना भी दुखी है बट ही थिंक्स कोई बात नहीं आई एम हैप्पी ही विल बी हैप्पी अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि यार टेंशन आ गई बहुत हो गया मुझे पसीना निकलने लगेगा आई फील गैस माय हार्ट बीट्स my heart will start pumping more pound होगा मेरा हार्ट so it all depends on how you train your mind the mind should not train your body and you correct पर मतलब सिर्फ आइडियाज नहीं मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि सबसे बेस्ट कन्वर्सेशंस अगर होते हैं ये that is true that is true 2 AM talks 3 AM talks ये दोनों वेले होता है ना so they talk out more loudly more clear लेकिन उसके सामने जो बताया आपने कि अगर सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं तो you feel more productive yeah you feel ऐसा लगता है कि दिन ज्यादा लंबा है और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं करेक्ट नाइट जॉब्स होती है इसलिए नाइट में काम करना पड़ता है ऐसा नहीं है जिस कंपनी में काम करते हो वो बाहर की है वो वहां पे उस टाइम पे काम करिए इसलिए हम यहाँ पे इस टाइम पे काम कर रहे हैं
no company tells you कि रात को ही कंप्यूटर पे करो, ठीक है, right? या if you're having some mechanical work कि भाई मशीन है तो रात को जगना पड़ेगा, नाइट की ड्यूटी है कि there is a different thing. Even I have done night duties in my internship in my in Chennai and all, but it is not advised basically कि रात को ही काम करो. Correct. हाँ. स्लीप साइकिल मेंटेन करो, बहुत सारी चीजों से बच के रहे. आप शायद स्लीप साइकिल मेंटेन करेंगे, आप एक साल में शायद 20 पॉडकास्ट निकालें, नेक्स्ट ईयर में 200 हो जाएंगे. करेंगे एक दिन में 2 पॉडकास्ट शूट करवाओगे, ज्यादा ईयर जाएंगे. और सोच तो शौचालय में ही है, और इससे ज्यादा जाया करो. Correct. So on that note, we'll conclude this podcast. It was one of the most fascinating podcasts I've ever done. और जो आपने हिस्ट्री में आप हमें लेकर गए तो बहुत ही मजा आया, क्योंकि डायबिटीज के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं छोटा अलग बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन पूरे हिस्ट्री से उसको जानना और उसके इम्पैक्ट्स और इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो वो जानने में बहुत मजा आया. मुझे तो मजा आया, एटलीस्ट वी होप के व्यूअर्स और लिसनर्स को भी मजा आए. I hope the same. I was not that boring. बहुत ज़्यादा interesting था. To all the listeners and viewers who have listened to us till now, till the end, make sure that you like, share, and subscribe to this episode. Please do it. and especially if you can share this episode, because this is one of the most important issues in today's era. So make sure you share this with as many people as possible. You can save lives. And you can reach out to Dr Mudrik Patel if there is any concern regarding diabetes or any other physiological issue. Thank you. Stay safe, stay healthy. Thank you.